Assalamu alaikum, dear student. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear student, this is class 8. Our subject is English, chapter number 7, and today my topic is Clever Mirchu. As you know, Clever Mirchu is a very interesting story. Dear student, we have completed reading, translation and question answer of chapter 7. I hope you have learned the previous lessons. In today my in today I will solve the book work, fill in the blanks, MCQs and words opposite. Let's start the lesson. Unit number 7, Clever Mirchu. Option B. Fill in the blanks with words given below. खाली जगह पुर करें जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं उन्हें यूज़ करके. The given words are unlike, growing, sorrowful, spread, anxiety, nodded, doubted, excited, pretending, remembered. These are words, and we will use these words by completing our fill in the blanks. Let's start to fill the blanks. Option 1. The children were growing so fast. The children were fill in the blanks so fast. बच्चे तेजी से growing. The word we use here growing. Growing बढ़ रहे थे यानी बड़े हो रहे थे. Next word. Option B. The youngest child gave his parents the utmost dash. सबसे छोटा बच्चा वो अपने वालिदैन को इंतहाई डैश दे रखी थी. यह इंतहाई डैश का बायस था. utmost एंजाइटी इंतहाई परेशानी का बायस था. Statement number 3. A great famine dash across the land. A great famine एक बहुत बड़ा कहर dash across the land पूरी दुनिया में spread फैल गया. Spread mean फैलना. Point number 4. The poor wife wept and was very dash. बेचारी बीवी wept रोती रही and was very dash was very sorrowful क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थी, बहुत ज़्यादा दुख में थी. And we will use here sorrowful. Our fifth statement is dash his brothers. Mirchu was not asleep. मिर्चू सोया हुआ नहीं था अपने भाइयों के डैश मीन अनलाइक. वी यूज़ हियर अनलाइक. अनलाइक मीन बरक्स यानी उनसे हट के. जब मिर्चू के सब भाई सोए हुए थे लेकिन मिर्चू सोया हुआ नहीं था. अपने भाइयों के बरक्स मीन उल्टा या उनकी तरह ना होना. Statement 6. He was in bed dash to be asleep. He was in bed वो अपने बिस्तर में था dash to be asleep सोने का बहाना करते हुए. Here we use pretending. Pretending mean बहाना करना. He was in bed pretending to be asleep. इसने बिस्तर पर गहरी नींद सोने का बहाना किया हुआ था. Portion B, fill in the blanks. Statement number 7. The boys were so dash that they completely forget about their hunger. बच्चे बहुत ज़्यादा डैश थे कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख के बारे में भूल गए.
वो अपनी भूख मुकम्मल तौर पर भूल गए। अबाउट देयर हंगर, भूख के बारे में या भूख को भूल गए। कंप्लीटली फॉरगेट, मुकम्मल तौर पर। Here we use the word excited. The boys were so excited. बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। That they completely forget about their hunger, कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख के बारे में भूल गए। Statement number 8 is the woodcutter dashed to his wife. woodcutter ने अपनी बीवी को डैश नोडिड सर हिलाकर इशारा करना। द वुडकटर नोडिड टू हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को सर से इशारा किया या सर से इशारा करके उसे आने का कहा। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 9 इज मिर्चू's brother doubted what he said. Here we use the word doubted. Doubted mean शक में डालना, यकीन ना आना। मिर्चू's brother doubted what he said. मिर्चू के भाइयों को उस पर यकीन ना आया जो कुछ भी उसने कहा। यानी मिर्चू के भाइयों ने जो कुछ मिर्चू ने कहा उस पर यकीन ना किया। Portion 10. Woodcutter's wife dashed her boys and began to sob. वुडकटर की बीवी अपने बच्चों को और रोना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को याद किया। एंड हियर वी यूज द वर्ड रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड मीन याद करना या उनसे याद आए। लकड़हारे की बीवी को अपने बच्चे याद आए और वो सिसकियाँ लेने लगी। बिगेन टू सोब, आह भर के रोना या सिसकियाँ लेना शुरू कर दिया। Dear student, we have completed fill in the blanks by using the given words. Next portion C starts. Portion C is read the following sentences and choose the correct answer. नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इस तरह से फिल करना है कि MCQs टाइप हैं, ऑप्शंस में दिए गए हैं। उन ऑप्शंस में हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है और अपनी स्टेटमेंट यानी सेंटेंस को पढ़ना है। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। These are MCQs. The first MCQs is the children were always hungry. The children were always hungry. बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। Here hungry means, hungry का क्या मतलब है? मतलब यहाँ hungry से क्या मुराद है? ऑप्शन A without food, ऑप्शन B without water, ऑप्शन C without money, बगैर किसी पैसे के, बगैर पानी के या बगैर खुराक के। Hungry means without food. ऑप्शन A is the correct option. यानी बच्चे जो भूखे रहते थे, भूखे होने का मतलब यहाँ पे खुराक का ना होना था। नेक्स्ट आवर स्टेटमेंट सेकंड, द यंगेस्ट सन gave the utmost anxiety to his parents. सबसे छोटा बच्चा अपने वालिदैन को इंतहाई उसने परेशान कर रखा था। Here anxiety means, एंजाइटी का यहाँ से क्या मुराद है? ऑप्शन A जॉय खुशी, ऑप्शन B सैडनेस गम, ऑप्शन C वरी परेशानी। Here anxiety means worry. So in second statement option C is the correct option. Our statement 3 starts. When he was born, Michu was the size of a pepper only. Size of a pepper means जब मिर्चू पैदा हुआ तो उसका साइज एक सब्ज मिर्च जितना था। साइज ऑफ अ पेपर मीन्स सब्ज मिर्च, यानी साइज ऑफ पेपर का यहाँ पे क्या मुराद है, ये किन मीनिंग्स में यूज हो रहा है? ऑप्शन ए वेरी फैट बहुत मोटा, ऑप्शन बी वेरी स्मॉल बहुत छोटा,
ऑप्शन सी वेरी बिग, बहुत बड़ा. The size of paper means very small. So B is the correct option or correct answer. State number 4. Some rich man will find them and look after them. कोई अमीर आदमी उन्हें पालेगा या उन्हें वो बच्चे मिल जाएंगे और वो उनकी देखभाल करेगा या उनका ख्याल रखेगा. हेयर लुक आफ्टर हेयर मीन्स लुक आफ्टर का यहाँ पे क्या मुराद है. स्टेटमेंट्स में लुक आफ्टर से क्या मुराद है. ऑप्शन ए रन आफ्टर देम, उनके पीछे भागेगा. ऑप्शन बी सर्च फॉर देम, उन्हें तलाश करेगा. ऑप्शन सी टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल करेगा. लुक आफ्टर हेयर मीन्स टेक केयर ऑफ देम, यानी उनकी देखभाल करेगा, उसका उनका ख्याल रखेगा. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर ऑफ स्टेटमेंट 4. Here the last statement is 5. As soon as there was twilight, Michu crept out of the cottage. Crept out here means as soon as there was twilight, जैसे ही धुंधल का छाया. धुंधल का यहाँ ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब सुबह का धुंधल का, यानी हल्की हल्की सी सुबह होना, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होना. यहाँ पे ट्विलाइट जैसे जैसे ही ट्विलाइट यानी सुबह का धुंधल का हुआ. मिर्चू क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, मिर्चू झोंपड़ी से चुपके से निकल गया. क्रेप्ट आउट हेयर मीन्स, क्रेप्ट आउट हेयर मीन्स यानी चुपके से यहाँ से निकलना क्या मुराद है. ऑप्शन ए रैन आउट क्विकली, तेज़ी से भागा. ऑप्शन बी मूव्ड आउट क्विकली, तेज़ी तेज़ी से वहाँ से खिसक गया या तेज़ी से निकला. ऑप्शन सी जंप्ड आउट क्विकली, तेज़ी से जंप लगाया. हेयर क्रेप्ट आउट हेयर मीन्स ऑप्शन बी मूव्ड आउट क्विकली, तेज़ी से वहाँ से निकला यानी चुपके चुपके वहाँ से खिसक गया. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ स्टेटमेंट 5. डियर स्टूडेंट, our portion C, choosing the correct answer, is also completed. Next, unit number 7, option D. This is the last question of chapter 7. Let's see what is the question. Question number D. Find each word in list A. Find a word of opposite meaning from list B. First of all, we will search out the word from list A and then we will match the column 1 to the column B, and column B consists of opposite words. मतलब लिस्ट A में जो वर्ड्स हैं उनको हमने मैच करना है लिस्ट B के वर्ड्स के साथ, और लिस्ट B में ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं. Let's solve this exercise. Portion D. Wife. Wife mean बीवी and the opposite of wife is husband. शोहर. Poor. गरीब and the opposite of poor is rich. अमीर. Next word is sad. Sad mean गमगीन and the opposite of sad is happy. खुश. Next word is parents. Parents mean walidain and the opposite of parents is children. Children mean बच्चे. Small. Small mean छोटा and the opposite of small is big. बड़ा. Next word is day. Day mean दिन and the opposite of day is night. Night mean रात. Next word is pretty. Pretty mean खूबसूरत and the opposite of pretty is ugly. Ugly बदसूरत. Next word is thin. Thin mean पतला, दुबला, and the opposite of thin is thick. Thick
गाढ़ा या फिर thin mean patla and the opposite of thin is thick. Thick mean दुबला मोटा या फिर गहरा गाढ़ा भी हो सकता है इसका मुराद. Okay, next word is sleep. Sleep mean सोना and the opposite of sleep is awake. Awake mean जागना. Next word is sit. Sit mean बैठना and the opposite of sit is stand. Stand mean खड़ा होना. Next word is black. Black mean काला. The opposite of black is white. White mean सफेद. Laugh. Laugh is the next word. Laugh mean मुस्कुराना, हंसना and the opposite of laugh is cry. Cry mean रोना. Son. Son mean beta and the opposite of son is daughter. Daughter mean बेटी. Old. Old mean बूढ़ा या पुराना. The opposite of old is young. Young mean जवान, energetic. The next word is long. Long mean लंबा and the opposite of long is short. Short mean छोटा. Dear student, our portion D is also completed. Dear student, next note down the diary and your diary. Learn and write the objective work on your book. Dear student, write the objective work on your book because this is your book work. Thanks for watching this video lecture. See you later with a new topic. Allah Hafiz.